तो समस्त को गुड इवनिंग पढ़ा स्टार्ट करिया गोटे 2 मिनट बट फर्स्ट ऑफ ऑल मो तरफ समस्त को सॉरी कि आमे जमती प्लान करूँ से भाया है ओके 2-3 आम माने पाखापाखि 3 वीक्स होगा क्लास नहीं आ माने 6-7टा क्लास आम पचर अच्छा तो से गुड़ा मुझे कभर करदेवी सप्ताह गोटे 2टा सप्ताह गोटे 2टा एक्सट्रा क्लास नेबी मैंने गोटे बहुत बिजी शेड्यूल थिला इलेक्शन वगैरह तुम जानी से डिले बट एबे पर वीक गोटे 2टा एक्सट्रा क्लास आम कभर करदे है जो टाइम लिमिट थिला से टाइम लिमिट रे सरीबो जति बैक हेची ताको आम एडजस्ट करदे ओके एंड आई होप कि समस्त पढ़ापढ़ी ठीक ठाक चलुव बिकज टाइम इज रनिंग ऑप्शनल एटलिस्ट समस्त पढ़ुव ठीक ठाक रे ओके बाकी जीएस तो ठीक अच्छे प्रिलिम्स माने टाइम देकी पढ़ बट मेन्स टिके बेसी फोकस करी पढ़ अप टू मिड जुलाई जुलाई एंड बंद है ऑप्शनल तुम परफेक्टली रेडी होवार अच्छी आउ जीएस रो भी एटलिस्ट 50% लाइक नुआ जमती एथिक्स अच्छी गवर्नेंस वगैरह जहाँ जहाँ किसी जोड़ा तुम टिके टफ एरिया ओके ओडिया हिस्ट्री ओडिया इकोनॉमिक्स ओडिशार इकोनॉमिक्स सर्वे को माने पढ़लणी ब्रीफली एटलिस्ट मेसेज लिख समस्ते कहले ये जो मेसेज रे तुम दियो रिप्लाई कि ओडिशा इकोनॉमिक्स सर्वे को माने पढ़ीच केमिति पढ़ा जाए एटलिस्ट जानिच कि किए पढ़ीच किछि ओडिशा इकोनॉमिक्स सर्वे सेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेंस में नो वन के पढ़ी न अच्छा ओडिशा इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत इंपोर्टेंट है जो मैंने पढ़ी न आई रिक्वेस्ट कि पढ़ समस्ते है केमिति पढ़ियार अच्छी कि ताको पूरा इन डिटेल फास्ट टू लास्ट जाए पढ़ियार नहीं ओके ताको कौन करियार अच्छी तार टॉपिक अनुसार किछि किछि डाटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाटा जोड़ा है से गुड़ा पढ़ो माने ताको नोट बनइबो पढ़ो माने कौन तुम ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे को नोट बनार अच्छी शॉर्ट नोट ओके शॉर्ट नोट माने धर तुम पढ़ुच एग्रीकल्चर चैप्टर ओके एग्रीकल्चर चैप्टर रे तब देखिबो कि ओडिशा रो जोड़ा सबुठु पुराना डाटा अच्छी माने धर ओडिशा रो डाटा 1950s रे अच्छी तो 1950s रे हमर कोन थिला प्रोडक्शन कोन थिला धर एक्सपोर्ट ओके आमे को क्रॉप रिच हमर स्टेट है ना तो तार प्रोडक्शन कौन थिला धर राइस तार प्रोडक्शन कौन थिला एक्सपोर्ट कौन थिला केबे सडन चेंज हेची हैला माने केबेठू सडनली हमर इंक्रीज हैला प्रोडक्शन माने किछ गोटे टाइम थिबो जेमति ग्रीन रिवोल्यूशन हैला या तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म हैला केबे गोटे चेंज हेथिबो सेडा लिखिबो आ प्रेजेंट सिचुएशन रे हमर प्रोडक्शन केते हमर कंट्रीब्यूशन केते टुवर्ड्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री देन हमर एक्सपोर्ट रे कंट्रीब्यूशन केते ओके एग्रीकल्चर जीडीपी केते इंडिया हार्डली 3-4टा डाटा आउ गवर्नमेंट रो कोन कोन स्टेप लास्ट माने रिसेंटली बहुत बहुत पुराना नहीं रिसेंटली कोन कोन स्टेप गवर्नमेंट नेछि माने स्कीम्स हला किछि पॉलिसी हला ओके एग्रीकल्चर रिलेटेड जदि किछि पॉलिसी पास कराइछि ओडिशा विधानसभा रे देन गवर्नमेंट रो कोन स्कीम ओके फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम हो या तो सब्सिडरी वाला स्कीम हो ओके एगुड़ा सब तुम नोट करिवो माने एंटायर एग्रीकल्चर चैप्टर विथ स्कीम एंड डाटा हैला आ गवर्नमेंट रो टारगेट कोन अछि जेमति कि सेंट्रल गवर्नमेंट रो टारगेट अछि डबलिंग फार्मर्स इनकम तो ओडिशा गवर्नमेंट रो भी टारगेट थिबो प्रोडक्शन को एई टाइम लाइन सुदा डबल करियर अछि कि छोट टारगेट थिबो ताकू गोटे 2 पेज भितर हार्डली तुम बनेबो सेमितिया हॉर्टिकल्चर हे गला सेमितिया माइनिंग रे हे गला ओके इंफ्रास्ट्रक्चर रे हला जहाँ जहाँ अच्छी ओके डू नॉट वेट टू गेट न्यू इनफॉरमेशन इन फेब्रुआरी तो पुणी आसो इकोनॉमिक सर्वे तार इनफॉरमेशन ऐड करी मु एग्जाम रे लिखि देबी मार्च सेमती नै
ତମେ ଯଦି ଏବେ ବି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ନା ତାକୁ ବି ଯଦି କନସୋଲିଡେଟ୍ କଲ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଓକେ, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେଟା 10-15 ପେଜେସ୍ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ତାଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତମକୁ କେବଳ ଚେରି ପିକ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଉଠି ଆନ୍ସର୍ରେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଦେବାର ଅଛି, କିଛିଟା ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତ ବହୁତ ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସେଇଟା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିବ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1.5 ସିଲାବସ୍ ତମର କଭର ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି, ଓଡ଼ିଶାର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଓଡ଼ିଶାର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମର ସେଇଥିରେ କଭର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାର ସଫ୍ଟ କପି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦିଆ ବି ହେଇଛି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପର୍ ଡେ ମାନେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲାନ୍ କର ଯେ ପର୍ ଡେ ୟା ତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତମକୁ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ 2 ପେଜ୍ର ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତମକୁ ବେଶୀ ନୋଟ୍ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ, ହାର୍ଡଲି 2-3 ପେଜ୍ର ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରୁ। ସୋ ଟେକ୍ 1 or 2 days ଫର୍ 1 ଚାପ୍ଟର। ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ 1-2 ଦିନ ନିଅ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଦେଇକି ଯେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ପଢ଼ିବି। ଓକେ, ତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼, ତାର 2-3 ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ହାର୍ଡଲି 15-20 ପେଜେସ୍ରୁ ତମ ନୋଟ୍ସ ଅଧିକା ନ ହେବା ଦରକାର। କ୍ଲିୟରଲି ଡାଟା 3-4ଟା ଡାଟା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଦେବ। ବହୁତ ସାରା ପଲିସି ଆଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଦେଖିବ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବନି। ହେଲା, କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଇବନି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଆଉ ପଲିସି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଆଉ ସ୍କିମ୍ ପଲିସି ବାସ୍ ସେତିକି ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢ଼। ଏଥିକ୍ସ ପାଇଁ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ପଢ଼। ହେଲା, ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବି କରି ହେଲାନି, ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍, ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅପସନାଲ୍ ତମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତମ ପାଖରେ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ଥିବାର ଅଛି। ଅପସନାଲ୍ର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ, ଏଥିକ୍ସର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ଓକେ, କାରଣ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆସିବ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ, ତାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ 1000 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବନେଇବେ। ତମକୁ କିଛି ଖୋଜିବା କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ତା ପରଦିନ ତମେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପାଇଯିବ 10-15 ପେଜେସ୍ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ତାକୁ ଜମା ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବି ତମେ ଖୋଜିବ ଯଦି 2024 ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆସିଥିଲା, ତାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ତମେ ନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପାଇଯିବ। ସେଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ କିଛି ଜିନିଷ। ହେଲା, ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଡାଟା 25ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଏବେ ବି ଥିବ। ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଡାଟା ଥିବ, ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡାଟା ବି କୋଟ୍ କରିପାରିବ। नो बडी नोस एक्जाक्ट डाटा। ଯିଏ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖାତା ଦେଖୁଛି ସିଏ କ'ଣ ପୁରା 2025ର ଡାଟା ଦେଖିକି ମନେ ରଖିକି ଆସିକି ସେମିତି ନାହିଁ ନା। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କୋଟ୍ 2024ର ଡାଟା ଅଲସୋ। ଓକେ, ସ୍କିମ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, କିପ୍ ଇଟ୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଓକେ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ଏତିକି ଜଏନ୍ କଲେଣି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ପଲିଟି ବହି। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ସବୁ ବହି ଧରିକି ବସୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଓକେ। ଯିଏ ଧରିନ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ, ବିକଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ତମେ ବହି ଧରିକି ବସିଥିବ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଓକେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ଚାପ୍ଟର ଥରେ ପଢ଼ିଛ, 2ଟା ଚାପ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓକେ, ସି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ପ। ତମେ ପଢ଼ିକି ଆସିବନି, ସିମ୍ପଲି ବସିବ ଶୁଣିକି, ଦେନ୍ ଏତେ ହେଲ୍ପ ହେବନି। ତମେ ଯଦି ଥରେ ପଢ଼ିକି ଆସିବ ନା, କିଛି ତମେ ନ ବୁଝ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନଜର ବି ପକେଇକି ଯଦି ଆସିଛ ତାହେଲେ ବି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଓକେ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାଲି ବି ତମର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ହେଲା, ମୁଁ ମାନେ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ବୋଧେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା କାଲି ରହିବ। ଓକେ, ଏ ସପ୍ତାହରେ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଜି କାଲି କରିଦେବି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରି ଯିବା ଆମେ। ଓକେ, ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ହେଲା, କି କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି।
Okay, all these things will yeah, बहुत छोटो chapter बहुत important. Okay, just ଗୋଟେ second. ଗୋଟେ second. Okay, तार important कौन first होची हमर amendment is under article just a second. वो article रे हमर अछि amendment वाला जो दिया है पावर just a minute. So she कौन कहूँ like any other constitution, the Constitution of India also provides for its amendment. What is amendment first of all? Amendment मान कौन? What does it mean? Amendment मान कौन? कि तमे जदि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ भी अच्छी तमे जदि विथ टाइम से किसी चेंज करिया चाहूछ चेंज इन द सेंस तमे किसी नुआ जिनस ऐड करिया चाहूछ या तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी अच्छी जोड़ा तमे रिमूव करिया चाहूछ जहाँ कहते रिपील ओके आइदर एडिशन और रिपील एनी चेंज यू वांट टू मेक is called as an amendment okay amendment to the constitution means change certain change in the constitution you want to make okay तो first of all amendment रो meaning ही होची कोन you want to change something okay that change can be either addition or repeal okay किछ तुम बाहर करियो चाहूछ या तो किछ ऐड करियो चाहूछ both you can do through amendment okay amendment means you have to bring a bill माने सिंपली तो जणा जाकी बाहर कर दबन ना गवर्नमेंट अछि माने सीता मन इच्छा किछ तो बाहर कर दबनी दे हैव टू ब्रिंग अ बिल कि हमें ए आर्टिकल रे चेंज करे पे चाहूछु they will request for support okay जोड़ा कहते simple majority special majority and all then the representatives will support okay either through voice vote or माने जहाँ भी तंगर voting वगैरह हबो then if there are certain rules regulations इतकी majority आपे दरकार इतकी majority आपे दरकार if that will happen then that bill will go to the president if president don't sign then it will be in the constitution will change okay so ये entire process को कहते amendment okay तो change करियार procedure अछि so in order to कौन पे रखा है in order to adjust itself to the changing conditions and needs okay amendment रो provision रखा है कौन पे because 1950s रे जो माने बनेले they don't know what are the requirements for the people of this country that will come let's say in 19 in let's say in 2050 or 2100 okay 50-100 वर्ष पर कौन रिक्वायरमेंट आसीबो या तो कौन कौन लॉ ऑब्सोलीट हे जो से टाइम रे जोटा कि आज दरकार अछि मे बी 50 इयर्स पर ता सेडा दरकार हबोनी तो ताको हम बाहर करियार अछि किछि किछि जिंस जोटा कि एबे रिक्वायरमेंट नाही बट सेडा पर पर आसीबो ओके तो सेही जिंस को आखि आगे रखी कि अमेंडमेंट वाला प्रोविजन अनाइथिला okay so that with change in time okay the conditions will change the needs will change so we need to add and subtract certain things from the constitution okay सेतमे रखा है amendment रो provision okay clear first of all what is amendment and why amendment then however the process laid down for its amendment is neither easy okay and not difficult because you know I am पढिछन the Indian constitution is a synthesis of all the constitution that was available at that time आमे जतरो constitution बनेले आमे दुनिया जगह constitution आनी कि
जार जहाँ बेस्ट फीचर बन ओके देर आर वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर प्योरली ओरिजिनल आम सबू किसी दुनिया जिते देश था से कन्स्टिट्यूशन रु आउ मेजर पर्सन आनी आम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओके जेहेतु आम सब जगह आनी ओबियसली किसी देशर आमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट थी किसी देशर आमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत इजी थी ओके सो यू नो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इट्स नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स व्हाई सिंस इट इज नॉट रिटन obviously it will be easy if the parliament Britain parliament wants to change the constitution definitely it will be easy कारण strictly किसी जिनिस लिखा है American constitution you know it is a written constitution okay and America is a purely federal country माने purely federal there are different governments and different citizenship for the state different citizenship for the center we are not purely federal आमर बहुत सारा फीचर अच्छी जोड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट निजे निजे डिसाइड कर दूची स्टेट मान को फोर्स कर अमेरिका सेमती नुह सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड फॉर द स्टेट दे आर ए प्योरली फेडरल कंट्री से अमेंडमेंट करिया बहुत डिफिकल्ट ओके दे नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट आई थिंक 3/4 ऑफ द स्टेट्स इफ दे वांट टू चेंज समथिंग ओके सो से अमेंडमेंट करिया बहुत डिफिकल्ट तो आम कौन कले अमेरिकार प्रोसीजर आ ब्रिटेन प्रोसीजर मिक्स करके आमर अमेंडमेंट प्रोसीजर आम बनइले दैट्स व्हाई आवर्स इज नाइदर फ्लेक्सिबल एंड नॉर रिजिड ओके these points you have to remember आमर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नुह कि फ्लेक्सिबल भी नुह दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ओके then this is important which article and which part okay of the constitution refers to the amendment power article 368 you must remember कि जहाँ भी आम कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज करवा जोड़ा कहते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके दैट वी विल डू अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 रे लिखा है जे व्हाट प्रोसीजर यू विल फॉलो what procedure the government of the day should follow if they want to change something in the constitution okay and this article is in part 20 of the constitution okay there are how many parts कितना part अछि हमरो total 22 22 sir 22 sir 22 sir कितना शेड्यूल अछि 12 टाइप 12 टाइप 12 टाइप करो 12 okay so there are 22 part and 12 so this amendment you remember this is in part 20 okay ए भला ही मन रखले मन रहबो इफ यू ट्राई टू माने घोसिया जे चेष्टा करियो पूरा लिस्ट मन रहबोनी अमेंडमेंट वाला जो आर्टिकल अच्छी को नंबर पार्ट रे अच्छी पार्ट 20 okay it states that the parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition variation or repeal okay जोड़ा कि कहली this is the meaning of amendment actually okay you can add something means parliament can add something change something okay I change means what maybe धर किछि लैंग्वेज को चेंज कराला okay किछि ऐड सब्सट्रैक्ट कराइनी just the language को चेंज कराला okay this is something just a variation then repeal means you have what subtracted something from the constitution either you have added or you have subtracted okay सेटा कहउछन repeal माने किछ तमे पूरा गोटे प्रोविजन थिला जाको तुम बाहर कर देला तार आज का डेट रे किछ दरकार ही नहीं रिलेवेंस नहीं okay any provision of the constitution according to the procedure laid down for the purpose article 368 रे लिखा है कि what procedure you have to follow okay when you are changing the constitution what procedure you have to follow then एटा तो हम पढ़िबा जतला बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा however the constitution cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution prelims रे क्वेश्चन हे परिबो कि parliament can amend every part of the constitution or everything of the constitution under article 368 whether it is a correct statement or wrong statement wrong statement wrong sir parliament cannot amend the provision which are basic structure means apart from basic structure parliament can amend everything but it cannot amend everything per se but it can amend everything
एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर रे जहाँ जहाँ अच्छी ताकू छाड़ी पार्लियामेंट किसी भी आमेंड करि परिबो। जदि गोटे स्टेटमेंट थिबो कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट आमेंड करि परिबो ना नहीं, फंडामेंटल राइट चैप्टर हम पढ़िथिले पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट भी आमेंड करि परिबो, बट फंडामेंटल राइट रो जो फंडामेंटल राइट ता बेसिक स्ट्रक्चर रे अछि ताकू आमेंड करि परिबोनी, बट जो फंडामेंटल राइट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स they are not part of the basic structure, so parliament can amend those fundamental rights. Okay, a basic structure provision code astila केशवानंद भारती केस, this we will read in the next chapter. Okay, ताको हम डिटेल जीवानी, नेक्स्ट चैप्टर या ऊपर ही अछि कंप्लीटली। देन प्रोसीजर कोन ए पॉइंट गुडा मन रखिबो, कोन मन रखियार थिला आईडी को पार्ट रे अछि हला, को आर्टिकल को पार्ट रे अछि पार्लियामेंट आमेंड करि परिबो। एटु तुम गोटे जिनस ऑलरेडी बुझी सारथिबोनी जोटा कि तळे भी लिखा आइछि। एटी देखो स्टेट लेजिस्लेचर विषय किसी लिखा ही नहीं, तार अर्थ कौन स्टेट लेजिस्लेचर पाखे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर नहीं। एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड पास थ्रू पार्लियामेंट ओनली, इट शुड ओरिजिनेट एंड पास थ्रू पार्लियामेंट। सर्टेन अमेंडमेंट्स विल गो टू स्टेट, but the amendment bill cannot originate from the state legislature, it will only originate in the parliament. Okay, then आम ये कौन मन रखियार अच्छी कि बेसिक स्ट्रक्चर छड़ा बाकी सब आमेंड हो पार, बेसिक स्ट्रक्चर को आमेंडमेंट तुम कर ना। ओके, देन प्रोसीजर कौन अच्छी 8टा 10टा पॉइंट अच्छी, ऑल द प्रोसीजर्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। माने तुमर ऑप्शन रे को भी प्रोसीजर को सी बुले बंके पचारि पारिबो, सो ऑल द स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी प्रिसाइजली हला। एठी हमें मन रखिदबा। देखो फास्ट कौन गोटे अमेंडमेंट पे फास्ट रे कौन दरकार, फास्ट हूँ कौन फास्ट रहा आर्टिकल 360 अंडर हम मन रहा। फास्ट पॉइंट कौन कि इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। तुम जो अमेंडमेंट कराया चाहो फास्ट ऑफ ऑल तुमको गोटे बिल आनियार अच्छी, कोड आसपार आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा राज्यसभा कोठी भी से बिलटा ओरिजिनेट हो पार है। मन रहा केवल लोकसभा ना, लोकसभा भी आसपार राज्यसभा भी आसपार, बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। को स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट करि परिबोनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा कोठू भी बिल इनिशिएट हो पारिबो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फास्ट बिल आसिला, बिल किए आनी पारिबो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर माने तो हम जानिछो मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर माने किए एनी अदर मेंबर एक्सेप्ट मिनिस्टर। माने पार्लियामेंट रे जत्ते मेंबर अछंती, धर लोकसभा रे अछंती हमर केते 545, राज्यसभा रे अछंती केते 250। ओके, वैकेंसी अपार्ट हम वैकेंसी विषय डिस्कशन करना, टोटल मेंबरशिप केही भी से बिल आनी पारिबे। ओके, वेदर से मिनिस्टर थाउ कि न थाउ, जे मिनिस्टर नाही ताकू कहउछन हम प्राइवेट मेंबर। ओके, सो द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। कौन में लिखा है because there are certain bills they can be initiated only by the ministers, private members cannot initiate a bill. Okay, there are certain bills, for example money bill, okay, and certain finance bills they can be initiated only by ministers. सेतमे मन रख जे constitutional amendment bill can be initiated by a member or a by a minister or a private member. It does not require the prior permission of the president. Certain bills require the prior permission, माने फास्ट तुम प्रेसिडेंट परमिशन आनिबो, जदि प्रेसिडेंट हाँ कहला देन ओनली तुम से बिल को इंट्रोड्यूस करि परिबो। ओके, बट constitutional amendment bill does not require the prior permission of the president, माने प्रेसिडेंट कर प्रायर परमिशन दरकार नाही। मन रहिला फास्ट होची इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एनी हाउस लोकसभा राज्यसभा, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सेकेंड होची एनी मेंबर आइदर मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस, आउ प्रेसिडेंट कर प्रायर परमिशन दरकार नाही, डज नॉट रिक्वायर। ओके, देन थर्ड पॉइंट द बिल मस्ट बी पास्ड इन each house by a special majority. Okay, special majority कौन, there are different types of special majority. Okay, we will read that. Said simply बुझे कौन majority of the total membership of the house, माने कौन हमर धर लोकसभा रे केते मेंबर अछंती 545, 545 रु केते जण एटलिस्ट वोट करियार अछि, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप माने डिवाइडेड बाय 2 माने तुमर केते आछि 273, एटलिस्ट 273 मेंबर ता सपोर्ट रे वोट दवार अछि, एंड
majority of 2/3 of the members of the house present and voting. ओके जदि लोकसभा आसुची बिल ताहले केते जण मिनिमम प्रेजेंट थिबार अछि 545 डिवाइडेड बाय 3 केते 2/3 ओके 2/3 इंटू 545 केते होची हमर 364 माने सिंपली बुझ जदि लोकसभा रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आसुची मिनिमम 364 मेंबर लोकसभा प्रेजेंट थिबार अछि ओके आउ मिनिमम 273 लोक ता फॉर रे वोट देबार अछि जदि सेटा पास करियार अछि बोले जदि एतिकी लोक नाहांती देन यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस जदि एतिकी लोक ता फेवर रे वोट दउ नाहांती देन इट विल नॉट पास ओके 2/3 मेंबर से हाउस रो एटलिस्ट प्रेजेंट थिबार अछि एंड टोटल मेंबरशिप जते अछंती हाउस रो एब्सेंट थांतु या तो वेकेंट थाउ वी डोंट काउंट दोस थिंग्स टोटल मेंबरशिप जति की तार अधा लोक एटलिस्ट ता फेवर रे वोट देबार अछि ओके देन ओनली इट विल पास मन रहिला दिस इज द थर्ड कंडीशन फोर्थ कंडीशन कोन each house must pass the bill separately okay there is no provision of joint sitting in the case of constitutional amendment bill there are certain ordinary bills जोठी कि तमे कोन करि परिबो लोकसभा और राज्यसभा रा जॉइंट सिटिंग तमे देखिलो कि लोकसभा रे पास होची राज्यसभा रे पास होनी या तो राज्यसभा रे पास होची लोकसभा रे पास होनी धर गवर्नमेंट लोकसभा रे मेजॉरिटी रे अछि राज्यसभा रे गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी नाही तो गवर्नमेंट कोन करिवो हेतेले गोटे जॉइंट सिटिंग कर दबो जॉइंट सिटिंग करके पास कर दबो जॉइंट सिटिंग कले कोन हबो जो लोकसभा रे तार बहुत सारा मेंबर अछंती से माने वोट कर देबे तो मिसै देला गवर्नमेंट रो हे जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट पास कर दबो बट जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन को तुम चेंज करूछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर एथिपे रखिछंती जे गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अब्रप्टली ओके जेमिति कि गवर्नमेंट गोटे जे हाउस रे मेजॉरिटी अछि बोली मन इच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करि परिबो नाही सेथिपे कंडीशन रखाइ छि कोन कि यू कैन नॉट पास द बिल थ्रू ए जॉइंट सिटिंग देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग जदि तमे लोकसभा राज्यसभा रे दीड जगह रे मेजॉरिटी रे अछ देन ओनली यू कैन pass the bill okay so there is no provision for joint sitting fourth point gala fifth point kono if the bill seeks to amend the federal provisions okay there are certain provisions where center and state both has certain roles okay ଦି ଜଣ ଜାଗାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଣ୍ଟର ର ଷ୍ଟେଟ ର if those provisions you want to change then it must be ratified by the legislature of half of the state by a simple majority माने यार मीनिंग कोन जदि तमे फेडरल फीचर हम आगु पढिबा ओके व्हाट आर द फेडरल फीचर्स व्हाट आर द पार्लियामेंट्री फीचर्स जदि पार्लियामेंट चाहूची कि किछि फेडरल फीचर रे चेंज आनिया पई देन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोन हबो एटलिस्ट अधा स्टेट माने हमर जो 30 टा स्टेट अछि एटलिस्ट 15 टा स्टेट रे सी सिंपल मेजॉरिटी रे पास होवर अछि नॉट स्पेशल मेजॉरिटी ओके सिंपल मेजॉरिटी माने कोन जेति लोक प्रेजेंट अछंती हाउस रे तार अधा लोक एटलिस्ट ता सपोर्ट रे वोट देवार अछि अधारु जणे अधिका ओके एटा हला फेडरल फीचर जदि तमे चेंज करूछ नेक्स्ट पॉइंट कोन आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and the state legislature if required the bill is present to the president तापर कोन करा हबो बिल को प्रेजेंट करा हबो प्रेसिडेंट पाखरे नेक्स्ट कोन ए पॉइंट भी इंपोर्टेंट the president must give his assent to the bill okay प्रेसिडेंट पाखरे किछि भी पावर नाही जे सी बिल को रिजेक्ट करिवे कि रिटर्न पठेबे कि किछि एक्शन न ने कि बसिबे okay when we will study president chapter and parliament chapter you will know कि there are some veto powers okay जोड़ा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पाखरे अछि वीटो पावर मींस तांकर डिस्क्रिप्शन सेटा सी चाहिले गोटे बिल ऊपर किछि एक्शन न नेकी रहबे सी चाहिले गोटे बिल को रिटर्न कर देबे हला पुनी रिकंसीडर पई सी चाहिले गोटे बिल को विथहोल्ड कर देबे विथहोल्ड माने ता ऊपर किछि एक्शन नेबेनी हला तो एई सब वीटो पावर तांक पाखरे अछि बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्षेत्र रे कोन he has to give his assent माने he has to give परमिशन पॉजिटिवली माने से ताको रिजेक्ट भी करि परिबेनी कि से ताको एक्शन न ने कि बसी परिबेनी कि से ताको रिटर्न भी करि परिबेनी पार्लियामेंट पाखु जे यू रिकंसीडर इट यू चेंज सर्टेन थिंग्स एंड ब्रिंग इट टू मी नो पावर इज गिवन टू प्रेसिडेंट ही हैज टू साइन द बिल okay that is called as assent माने he has to agree with the bill okay he has to put his signature on the bill okay
This is very very important. It as exam re. Okay, you have to remember. Once, then last point, once president assents, gives his assent, means gives his agreeableness, the bills becomes an act. Okay, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି constitutional amendment act. ହେଲା, ସେ act ହେଇଗଲା and constitution change ହେଇଗଲା. ଯାହା ବି ତମେ change କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, the constitution stands amended. Okay, ତ କ'ଣ କ'ଣ important steps ଥିଲା, we will revise once. First of all, article 368. Okay, under ତମେ କରୁଛ constitutional amendment. Second କ'ଣ, it can be introduced in the either house of the parliament. Okay, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା. Third point କ'ଣ ଥିଲା, president ର prior permission କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ. Then fourth ଥିଲା କ'ଣ, minister या तो no minister, private member, anybody can introduce. Fifth point थिला କ'ଣ, it must be passed by each house with special majority. Okay, parliament रे simple majority रे constitutional amendment bill pass ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ. Okay, each house द्वारा special majority रे pass ହେବ. Special majority माने प्रिलिम्स रे केबे तुमको ए कंडीशन दबोनी, जदि देथिबो तुम जानि दबो जे स्पेशल मेजॉरिटी रो कंडीशन देछि माने सेटा ठीक. ओके, 2/3 ऑफ द मेंबर मस्ट प्रेजेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मस्ट वोट. ओके, इन फेवर और इन अगेंस्ट. देन सिक्स्थ पॉइंट कोन थिला कि जॉइंट सिटिंग रो कोनोसी प्रोविजन नाही. ईच house must pass the bill separately. Okay, there is no provision of joint sitting in case of constitutional amendment bill. This is very important, you have to remember. Okay, because a option टा confusing. Then कौन हला, federal provision जदि थिबो, then half of the state रो कौन तुमको ratification भी दरकार. Okay, half of the state must ratify it if there are changes in federal provisions. Then last point कौन मन रखियार अछि कि president must give his assent. जदि गोटे ऑप्शन थिबो कि president can withhold the bill, president can return the bill. Okay, then that is wrong. President must, ए वर्ड को मन रखो, must give his assent. से दबा पई बाध्य. Okay, तांका पाखरे कोनोसी भेटो पावर नाही when it comes to constitutional amendment bill. Okay, एतिकी होची एक्चुअली इंपोर्टेंट. बाकी एडी जति प्रोविजन अछि एवडा को तमे टिके टिके पढिबो हला, मु केता एडी देखिए देबी इंपोर्टेंट. बट अदरवाइज तुमको जस्ट डिवाइड करिक मन रखियार अछि कोटा को टाइप रो मेजॉरिटी का पे दरकार. ओके, एडी से ही लिखा है तीन भाग रे विभक्त करा है 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. आर्टिकल 368 provides 2 types of amendment. Okay, under article 368 there are 2 types of amendment, but actually there are 3 types of amendment. We will read that. Okay, दीटा टाइप अच्छी अंडर आर्टिकल 368 रे. आउ गोटे कौन अच्छी, सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. माने जति मेंबर प्रेजेंट थिबे तांकर अधा जदि वोट देले ताहले भी किछिटा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हबो. ओके, सेटा आर्टिकल 368 अंडर नो. ओके, तो एट देखो से कौन कहूँ, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways. This is important. Constitution can be amended in 3 ways. गोटे होची कोन, सिंपल मेजॉरिटी रे, आउ गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी रे, आउ गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रो कंसेंट रे. तो बी आउ सी ए दीटा होची अंडर आर्टिकल 368. ओके, दिस इज आल्सो अमेंडमेंट बट दिस इज नॉट अंडर आर्टिकल 368. ओके, बुझी पारलो. आर्टिकल 368 अंडर रे ए दिटा अमेंडमेंट, एटा भी अमेंडमेंट आ थ्रू रे भी तुम चेंज करिवो, बट आ थ्रू रे जोडा चेंज हबो सेटा को तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोली कहबोनी, सेटा को तुम सिंपल अमेंडमेंट बोली कहबो. बुझी पारलो. देखो एबे कोन होची, थ्रू एग्जांपल हम बुझिवा. धरो एथर जो सेशन बसथिला लास्ट सेशन, ए जो इलेक्शन चलछा पूर्वरु, ए सेशन रे भी बहुत सारा चेंजेस गवर्नमेंट करिछि हैला. बहुत सारा एक्ट फैक्ट, बहुत सारा जिनस रे कॉन्स्टिट्यूशन रे भी चेंज करा होची. बट सेउडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होउनी. हमर लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोडा के कहि परिबो, व्हाट वाज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, केते नंबर आ कोन? Sir, 105. 105 सर 108 थिला, 106 भी हला 108 हैं. 108 भी हिच होगा लास्ट. 8 कोन सर रिजर्वेशन रिलेटेड होता 108 ना 106, मु जानि छु 106.
सर सेटा रिजर्वेशन रिलेटेड थिला 108 कोण सर 106 थियो बोधे कोण सेटा 106 कोण रिजर्वेशन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट रे पुलिस ମାନଙ୍କର 33% Citizenship Amendment Act. Eh? Citizenship Amendment Act is not a constitutional amendment act. Economically section 10% reduction दिया जाता है. सर क्रीमी लेयर रिमूवल बोधे एटा ओबीसी रो 106 रे 106 30% देखिए रिजर्वेशन कुह Economically section 10% reduction दिया जाता है. हम्म देखिए कि कुह 106 कौन 106 सर amendment वुमेन रिजर्वेशन बिल सेटा थिला केते नंबर 100 लोकसभा हाँ 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 रही सर तो सेटा होची लास्ट जदि देखो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची टोटल 106 टा ही बंद हेची बट ता छडा भी देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स ओके चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेडा सब कोन हेची सिंपल मेजॉरिटी रे हेची तेणु सेगुड़ा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोली कुआ होनी एबे जे जणे कहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जदि हेई थांता ना तार गोटे नंबर थांता ए एक्ट किसी नंबर नहीं जेमती हमर 106 होची वुमेन रिजर्वेशन हैला 105 कोन आई थिंक जो 10% रिजर्वेशन दिया हेची जनरल कैटेगरी रे for EWS reservation हां ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन जनरल रो 104 कोन ओबीसी sir OBC ना criminal layer non criminal layer 103 कोन ए लास्ट 5-6 टा तुमको मन रखियार अछि ओके दे विल कम इन द एग्जाम सर 103 टा अछि 10% रिजर्वेशन अच्छा 101 टा जीएसटी बोधे हैं 105 टा कोन ताहले Restore the state power to और make पांचटा एससीबीसी रो सर रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू अच्छा आइडेंटिफाई एससीबीसी अच्छा 105 104 होची ओबीसी वाला सी सी OBC तो 90 105 sir OBC. 104 104 is reservation seat for SC ST in Lok Sabha and State Assembly अच्छा एससी एसटी लोकसभा हां ठीक अछि ताको जो रिटेन करा हला 2020 and state assemblies ठीक अछि 103 हे गला हमर 10% ईडब्ल्यूएस 102 10%. Sir, president to identify backward classes. yes backward class then 101 होची हमर जीएसटी GST. है ना 99 थिला एनजेएससी 99 होची एनजेएससी नेशनल जुडिशियल कमीशन जोटा कि सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल विल डिक्लेयर कला सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैला देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्स दे आल्सो चेंज थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट but they are not under article 368 that's why they are not constitutional amendment act okay they are simply amendment act तो दीटा वे रे अछि गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी आ गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ठीक अछि तो सिंपल मेजॉरिटी रे केतरा अछि मन रखियो एवडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नो एवडा सिंपली अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अंडर आर्टिकल 368 ओके ए थ्रू केतरा इंपोर्टेंट मन रखियो कोडा कोडा सबुड़ा तो इवेन मन रखियार अच्छी बिकज अदरवाइज यही थ्रू कोटा गोटे दे देथिबो से स्पेशल मेजॉरिटी गोटे दे देथिबो तुमको देखियार अच्छी कोटा सिंपल मेजॉरिटी होची कोटा स्पेशल मेजॉरिटी तो ट्राई करिवो एटलीस्ट सबुड़ा मन रखिया पई हैला बट एटलीस्ट इंपोर्टेंट कोन देखो एवडा तो मन रहबो कि न्यू स्टेट रो एडमिशन पई फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ओके तारा बाउंड्री चेंज करा पई ये सब पई दरकार नै हां ए गुड एग्जांपल कोन जो आंध्रा हमर बाइफिकेट हला ना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एटा भी गोटे अमेंडमेंट ओके कारण एटा कोन हला न्यू स्टेट फॉर्मेशन हला आ अल्टरेशन ऑफ तार एरिया हला बट एटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके तो नुआ स्टेट को तुम किसी ऐड करलो को स्टेट रो धर एरिया चेंज करलो ना चेंज करलो ता बाउंड्री चेंज करलो
ओके एबे जेमती हमर डिस्प्यूट चली ओडिशा और आंध्र भितर जो कोटिया तुम जानथिबो कोटिया पंचायत कोटिया को लेकिन डिस्प्यूट चली जदि बाउंड्री रीड्र कराला है देन इट विल बी एन अमेंडमेंट बट नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके देन abolition एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके एटा गोटे जिंस एटा ही गोटे एक्सेप्शन जोड़ा कि स्टेट कैन इनिशिएट ओके स्टेट असेंबली रे माने हमर जो विधानसभा अछि सेठी तमे इनिशिएट करि परिबो ए बिल देन इट विल गो टू द सेंटर दे विल डिस्कस दे विल क्रिएट और abolish योर जे तमे क्रिएशन करिया पे चाहछ जेमति कि ओडिशा एबे धर पठेछि हमर लेजिस्लेटिव असेंबली अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल पई हला प्रपोजल तो सेटा कोन हेछि ओडिशा असेंबली रे फास्ट से माने पास करिवे स्पेशल मेजॉरिटी रे देन दे विल सेंड इट टू द पार्लियामेंट parliament can create okay similarly parliament can abolish also okay legislative councils then amar अछि second schedule जोड़ा कि emoluments allowances privileges एडा पे भी constitutional amendment दरकार नहीं okay under article 368 दरकार नहीं then quorum अछि quorum माने 10% जो present रहबा दरकार okay गोटे सेशन चलिया पे बोली then salary okay important ए भितर कोन कोन थिला एडा गोटे मन रखियो important कि हमर जो abolition and creation of council okay या पई this is not under article 368 you have to remember okay then तो बाकी salary allowances rules privileges okay english language then these are एवडा तो इजी एवडा तुमरा मन रहबो ऑफिशियल लैंग्वेज सिटीजनशिप ओके सिटीजनशिप पई भी जे तमे को सिटीजन नुआ एक्वायर करबा चाहछ या तो टर्मिनेट करबा चाहछ सेंटर then also set दरकार नहीं election to the parliament and state legislature okay this is not constitutional amendment act आपे दरकार नहीं delimitation एटा भी मन रखियो this is also important okay this also can be done through simple majority या पे भी तुमको दरकार नहीं किसी constitutional amendment act okay then union territories creation abolition पे किसी दरकार नहीं okay otherwise तुम भी देखिलो कि जम्मू कश्मीर गोटे स्टेट थिला ताको हम यूनियन टेरिटरी कर देले हना नहीं जे एंड लद्दाख कर देले ताको सेटा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कराइनी नले तार गोटे नंबर थांता एते नंबर अमेंडमेंट रे हेची बोली हना सेटा सिंपली अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अंडर आर्टिकल 368 सिंपल मेजॉरिटी रे कराइछ देन फिफ्थ शेड्यूल ले जो अछि हमर जहा भी ओके शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब सिक्स शेड्यूल ले जो अछि ट्राइबल एरिया ए सब पे एवडा भी इंपोर्टेंट ओके ये तीन चारटा प्रोविजन इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम रे आसियार चांस अछि कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट whether it is under article 368 or not आ तापे कोन मेजॉरिटी दरकार सिंपल या स्पेशल ओके एति थिला हमर सिंपल ले चारि पांचटा मन रखियो जोडा जोडा मु तुमको गोल मारि के देइछि सेडा इंपोर्टेंट हला बाकी ओडा तमरो नॉर्मल मन भी रहि दियो किछटा देन हम देखिया स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन 2/3 रहियार अछि प्रेजेंट हला आउ टोटल स्ट्रेंथ रो हाफ आइदर फेवर रे और एग्नेस्ट रे वोट करियार अछि हला एडा ही लिखाइ छी ता ए स्पेशल मेजॉरिटी रे कोन चेंज करि परिबो तमे जदि फंडामेंटल राइट चेंज करियो चाहछो एउडा होछि अंडर आर्टिकल 368 हला जदि फंडामेंटल राइट कि चेंज करियो चाहछो डीपीएसपी रे कि चेंज करियो चाहछो आ सबु प्रोविजन जोडा कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड थर्ड कंडीशन रे नाही बाकी सब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी प्लस ऑल दोस प्रोविजंस व्हिच आर नॉट आइदर पार्ट ऑफ द फर्स्ट दिस कंडीशन ओके और नॉट पार्ट ऑफ दिस थर्ड कंडीशन दा कोन जोटे कि स्पेशल मेजॉरिटी रो पार्लियामेंट रे भी दरकार प्लस अधा स्टेट रो कंसेंट भी दरकार ओके ये दीटा भीतर जहां भी नाही ये सब जगह आसीबो हमर सिंपल मेजॉरिटी रे ओके एटलीस्ट मन रखो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ओके ये दीटा पे स्पेशल मेजॉरिटी दरकार they are under article 368 if they want to change third condition को हम कोन पढिथिले जहां भी फेडरल फीचर अछि जदि ताकू हमर पार्लियामेंट चेंज करे चाहूची देन ताकू तमे स्पेशल मेजॉरिटी रे फर्स्ट रे पास करिवो पार्लियामेंट रे तापर अधा स्टेट द्वारा तुम पास करिवो हला एठी गोटे कंडीशन कोन अछि मन रखिवो the moment half of the state gives their consent okay the formality is completed माने हे गला तमरा constitution amendment हे जिवो
आउ तांको किसी टाइम लिमिट दिया है, देयर इज नो टाइम लिमिट। ओके, किसी टाइम लिमिट नहीं जे स्टेट अधा स्टेट मासे भितरे कि 2 मास भितरे केते दिन भितरे तांके तांकर ओपिनियन जणया दरकार। ओके, ता पे किसी टाइम लिमिट नहीं। दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। तार ए कंडीशन रे कोन कोन फेडरल फीचर किसी एग्जांपल एट देछि। फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। ओके, प्रेसिडेंट रो इलेक्शन केमिति हबो, कोन प्रोसीजर रे हबो, एटा को जे तुम चेंज करियो चाहुचो, एबे जहा प्रोसीजर अछि फॉर एग्जांपल ताको जे तुम चेंज करियो चाहुचो, देन दैट मस्ट पास थ्रू हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, then extent of the executive power and unions of the union and the state। ओके, एग्जीक्यूटिव माने को माने जो माने होचंदी मिनिस्टर, जो तांकर पावर रे तुम किछ चेंज करिया पे चाहुचो, देन आल्सो हाफ ऑफ द स्टेट रो कंसेंट तुमको दरकार। देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रो जदी किछि फीचर रे तुम चेंज चांस पावर रे चेंज चांस करिया चाहुचो, देन आल्सो इट इज रिक्वायर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ओके, जोड़ा कि हमर को लिस्ट दिया हिची केते नंबर शेड्यूल रे अछि सेटा 7th schedule. 7 शेड्यूल। जदि 7 शेड्यूल रे किसी चेंज चांस करिया चाहुचो, देन यू नीड द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ओके, देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एटा एबे ऐड करा हिची जीएसटी आसिला पोरे। ओके, देन अगेन 7 शेड्यूल, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट माने राज्यसभा। जदि राज्यसभा रो मेंबरशिप तुम स्टेट अनुसार चेंज करिया चाहुचो, देन आल्सो यू नीड दैट। then power of the parliament to amend the constitution itself। okay, जदि article 368 रो भी किछि प्रोविजन तुम चेंज करियो चाहुचो, then also you need the consent of half of the states। okay, you parliament cannot change it unilaterally। बस एति ही मन रखियार अछि। मेन हला प्रोसीजर जो स्टेप थिला तमरो हला, ए स्टेप गुडा पूरा एक्जाक्टली मन रखिबो, बिकॉज ए भितर कंफ्यूजन वाला तुमको आसीबो कि प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ द बिल, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट। नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, किए तब इंट्रोड्यूस करि परिबो, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। ओके, देन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे बिल इंट्रोड्यूस हे परिबो, या पे जॉइंट सिटिंग नाही। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर रे बिल इंट्रोड्यूस हे परिबो नाही। ओके, प्रेसिडेंट रो प्रायर परमिशन दरकार नाही। so these conditions you have to remember। okay, आउ सिंपल मेजॉरिटी रो स्पेशल मेजॉरिटी तो मन ही रहबो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दरकार। सिंपल मेजॉरिटी रो 4-5 टा जोड़ा मु इंपोर्टेंट कहिछु मन रखिबो हला। आउ एटा स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रो भी मन रखिबो। ए या आउ ता भीतर कंफ्यूजन न होबार अछि। ओके, देन क्रिटिसिज्म कोन किछि एटा किछि इंपोर्टेंट नाही, गोटे इंच खाली जानि थाओ कि in comparison to US is very rigid। okay, हमें स्टार्टिंग रे देखिथिले ब्रिटेन रो अमेंडमेंट पावर इज वेरी फ्लेक्सिबल, US रो वेरी रिजिड। ओके, सो इट कोन लिखा द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल जोटा कि हमर अछि। US रे कोन स्टेट लेजिस्लेचर भी इनिशिएट करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, माने बहुत डिफिकल्ट। ओके, आउट कोन आमर किछिटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रो अधा स्टेट रो कंसेंट दरकार। यूएस रे 3/4 स्टेट रो कंसेंट दरकार, माने ताकर 50 टा स्टेट अछि तो ऑलमोस्ट 37-38 टा स्टेट रो कंसेंट ताको दरकार। ओके, जदि पास करियर अछि एतिकी फरक, बट एवडा एते डिटेल दरकार नै हला। एतिकी मन रख जे यूएस इज रिजिड, आवर इज फ्लेक्सिबल, आवर इज लाइक नॉट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, बस एतिकी चैप्टर रे, बाकी एवडा किछि कार ओपिनियन एडा दरकार नै तुमको। ओके, समस्त क्लियर।